Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma kulli waliyyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajum. Assalamu alaikum, respected brothers and sisters, Mu'mineen and Mu'minat. It's me, your host, Sayyida Anam Fatima Naqvi from Vilayat TV, Lahore studio. Mu'mineen, first of all, I would like to present condolences and baragaya Imam Zamana Ajjal Farajum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Ajjal Farajum, and to all Mu'mineen on the martyrdom anniversary of Imam Muhammad Al-Baqir alayhi salam. Mu'mineen, Imams of Ahlul Bayt alayhi salam, as we have discussed in our previous programs, when we talked about the life of Imam Raza alayhi salam, when we talked about the life of Imam Sadiq alayhi salam, when we talked about the life of Babul Hawaj Musa al-Kazim alayhi salam, lives of Imams, it was never easy. They were arrested, they were imprisoned, they were poisoned. They had to face hardships throughout their life. For what? For their divine status, for their knowledge, for all the honor which was given by Allah subhanahu wa ta'ala and which could not be digested by sometimes Umayyad's caliphate, sometimes by Abbas's caliphate. Tonight we are going to discuss with you the life and works of Imam Muhammad Al-Baqir alayhi salam. The focus of the discussion will be on what were the circumstances when Imam alayhi salam was martyred, and what were the factors behind killing Imam, and how Imam alayhi salam set a very educational ground for the Muslims, and still now for today we are getting benefit from the knowledge of Imam. Imam Muhammad Baqir alayhi salam, let me give a brief introduction. His father is Imam Sajjad alayhi salam, our fourth Imam. Mother Hazrat Fatima Abdullah, the daughter of Imam Hassan alayhi salam. Father Imam Sajjad alayhi salam, the son of Imam Hussain alayhi salam. Mother, the daughter of Imam Hassan alayhi salam, Abdullah. Kunya Abu Ja'far, because he was called by the name of his son Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. So he was called Abu Ja'far, and his title Al-Baqir, the most famous one title, Al-Baqir, the one who split open the knowledge. That's why he was called Al-Baqir. Then there are some other titles which indicates towards his high character and his high inclination. What a great character Imam had. These titles are telling us, because these titles and these names are given by the people of the time. Imam was also called Al-Amin, the trusted one. He was also called Al-Shabih, the one who was like Rasul Khuda sallallahu alayhi wa alihi wasallam. He was called Al-Shahid, the proof. He was called Al-Hadi, the one who guides. He was also known as As-Sabir, the patient one, known as As-Shakir, the grateful one. These are all the titles associated with the great personality Imam Muhammad Al-Baqir alayhi salam. We have Sister Aruj in our studio. Assalamu alaikum, Sister Aruj. Sister Aruj, today we are going to discuss the Shahadat, martyrdom of Imam Muhammad Al-Baqir alayhi salam, life and works of Imam, what Imam did for the Muslims of Medina at that time, how hard it was for him, because he is the one who witnessed the tragedy of Karbala, according to some tradition, in a very young age of 2.5 years, and some traditions are saying it was 4 years. But ultimately it was a very, very young age of Imam when he witnessed the shahadat of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, his own grandfather. He witnessed the shahadat of all the other male relatives of his family, and he saw the tragedy of Sham اینڈ کاروان حسینی. بالکل بازار شام اور دربار یزید کا جو اس ٹائم احوال و حال تھا، وہ بھی امام علیہ السلام نے جو ہے خود اس کے گواہ رہے، اور یہ تمام مصائب و آلام جو اہل بیت محمد پر گزرے، امام جو تھے اس کے گواہ تھے. اور اس وقت جو ہے آپ نے جس طرح سے بتایا کہ روایات میں ہے کہ 4 سال یا 2.5 سال کی امام محمد باقر کی جو تھی عمر تھی جب یہ تمام جو ہے واقعہ کربلا پیش آ رہا تھا.
Okay, Sister Aruj, how would you like to tell us about the life of Imam? We saw in the tradition Imam alayhi salam was born on 1st of the Rajab, 57 years after Hijrah, and in Medina Imam was born. Imam is also martyred in Medina at the age of 57 and poisoned by Umayyas and Hasham bin Abdul Malik. We will go in the detail of that. How would you tell us about the background of the birth of Imam? Because the traditions are saying the good news about the birth of Imam Baqir al-Islam was given by Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam himself. At least 10 years before, Rasul Khuda told that one in my family will be the having all the knowledge, the one who will be able to split open the knowledge, the one who will be so much into knowledge involved that he would have studied everything. He would know the origin of a thing, he would also know the hidden and the visible, he would know even the branches from where that knowledge comes. And he in this way gave the prediction about the birth of Imam Baqir alayhi salam. बिल्कुल सिस्टर हम इमाम की जो है अलकाबात और विलादत के बारे में जो है, और इमाम को बाकिर जो है लक़ब सबसे ज़्यादा जो मशहूर तरीन है उसको क्यों कहा जाता है, उसके मायने क्या है, उसके बाद कि हमारे इमाम के बारे में जो है ये कहते हुए और ये तज़किरा करते हुए नज़र आते हैं कि इमाम के आने से पहले जो है एक अगले जो इमाम आ रहे हैं, जो इमाम ज़माना जो अगले हैं, उनके बेटे हैं, उनके फ़र्जंद हैं, उनके बारे में कोई प्रिडिक्शन की गई थी या नहीं की गई थी, अगर की गई थी तो किसकी तरफ से की गई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या एक बयान करना चाहेंगे रसूल खुदा की तरफ से, जो इमाम मोहम्मद बाकिर के लिए ख़ुसूसी तौर पर जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था। माशाअल्लाह। सबसे पहले जो है इमाम के बहुत ही खूबसूरत अलकाबात का सिलसिला नाम आपने जिक्र किया, जिनमें जो है लोहे महफूज के मुताबिक रसूल खुदा ने जिस तरह से नामों का जिक्र कर दिया, लोहे महफूज पे भी इमाम मोहम्मद बाकिर का नाम भी मोहम्मद रखा गया था। और जिस तरह बाकी मासूमीन और आयमा की जो है विलादत को हम देखते हैं, तो इसी तरह जब इमाम मोहम्मद बाकिर जब वतन मादर में आना शुरू हुए, इमाम के आबा व अजदाद की तरह इमाम के जो है इस दुनिया में आने से पहले गैब से आवाज़ें आना शुरू हुई, और जब 9 माह के हुए तो फरिश्तों की बेइंतहा आवाज़ें जो है वो घर में गूंजना शुरू हो गई। और इस तरह जब इमाम की विलादत हुई तो विलादत के वक्त पे जो है इमाम जिस तरह से एक आम इंसान होता है कि हमारी नज़रों के सामने बिल्कुल आम इंसान की तरह जो है इमाम 3 मरतबा छींके और उसके बाद हमद खुदा जो है वो बजा लाए, और एक मरतबा जो है एक शबाना रोज़ को इमाम के दस्ते मुबारक से बेइंतहा जो है नूर भी जो है वो निकलना शुरू हुआ, और बहुत से मतलब इमाम की विलादत के साथ ही मोजिज़ात और इल्म करामात जो इमाम के थे वो नमूदार होना शुरू हो गए। और इसमें ग्रामी जो है उसके बारे में तज़किरा किया कि जो लोहे महफूज के मुताबिक मोहम्मद था, और कुन्यत अबू जाफ़र अलकाबात में जो है कसीर तरीन जो लिए जाते हैं उसमें बाकिर, शाकिर और अलहादी जो है सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। माशाअल्लाह। अब बाकिर का जो है लफ्ज़ हम इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उलमा से रिवायात हैं कि इसके मायने शिक करने और वुसअत देने के हैं। और वुसअत किस चीज़ को देने के हैं, आपको इस लक़ब से मुलक़ब इसलिए किया गया कि इल्म मुआरिफ को नुमाया फरमाया इमाम अलैहिस्सलाम ने, जिस कदर हो सका इमाम ने इल्म मुआरिफ को नुमाया फरमाया, और हक़ाइक़ व अहकाम हिकमत और लताइफ़ के वो सरबस्ता ख़जाने ज़ाहिर किए माशाअल्लाह, जो लोगों पर कभी ज़ाहिर न थे, कभी हवेदा न थे, कि जिनके बारे में जानते भी न थे। कि इसकी मिसाल इस तरह से देंगे कि कोई शख्स इमाम के पास एक वक्त में आया तो इमाम से अगर उसने 8 सवाल किए, 10 किए, जितने चाहे किए, दलील के साथ इमाम जो है उसको उस बात पर कायल करते हैं। उन जवाबात से जो है अगर कोई राहिब था, कोई ईसाई था तो वो मुसलमान हो जाता, और अगर कोई मुसलमान था कि जिस तरह अबू हनीफा की मिसाल लेंगे कि जिस कदर इल्म जनाब इमाम जाफर सादिक उनसे हो सका इमाम जाफर सादिक से लिया, और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर से भी इल्म लिया। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो मसाइल में या मसाइल शरिया में क़यास से काम लेते हैं। तो बहुत ही जो है बिल्कुल मुख्तसर जो है गुफ्तगू करेंगे कि जब इमाम बाकिर को पता चला कि ये मसाइल शरिया में या लोगों को सवाल के जवाबात देने में क़यास से काम लेते हैं, तो इमाम ने कहा तुम्हारा जो दिल चाहता है मुझसे सवाल करो, मैं उसके बदले तुम्हें जवाब दूंगा, और उसने जो है बाकायदा उस जवाबात की दलील भी दूंगा कि तुम ये मानने पर जो है और ये तस्दीक करने पर राज़ी हो जाओगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और उस तरह से तुम्हें ये करना चाहिए, और इसके बाद ये वादा करो कि तुम क़यास से काम नहीं लोगे। इस तरह इमाम मोहम्मद बाकिर ने भी जो इल्म व हिकमत के लिए काम किए कि जनाब रसूल खुदा का खुद का इरशाद है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इल्म मुआरिफ को
اس طرح سے شگافتہ کر دیں گے کہ جس طرح ذرات کے لیے زمین کو جو ہے ذرات کے لیے شگافتہ کر دیا سبحان جاتا اللہ. ہے. اسی لیے تو انہیں بقر العلم کہا گیا, جو علم کا بکر کر دیں, ان کو بالکل. سپلٹ اوپن, the one who split open the knowledge, جو علم کے اوریجن تک جائیں, اس کی ان برانچز تک جائیں جو ہڈن ہیں, اور جس کے بارے میں کوئی کمپلیٹلی جانتا تھورو نہیں. اسٹڈی کریں اس کو, بالکل اس کی انر اسٹڈی کریں. نو ون کین ایون ہیو این آئیڈیا کہ امام کو ماشاءاللہ اب جب راہب آتے تھے, بڑے بڑے مناظرے ہوا کرتے تھے. سو آل دا پیپل, دا سیرینز آر آلسو witness of these events, how امام علیہ السلام not once, many times he defeated the scholars of the other اور religions. بالکل جب لقب باقر کی بات کرتے ہیں تو اس جو علم کے جو ہم خزانوں کی بات کر رہے ہیں کہ امام نے وہ ظاہر کیے کہ جس سے کوئی پہلے واقف نہ تھا. یہاں پر یہ بھی ایک روایت ہے کہ علامہ سبت ابن جوزی لکھتے ہیں کہ کثرت سجود کی وجہ سے امام کی پیشانی وسیع تھی, اس لیے بھی باقر لقب سے ملقب کیا یہ گیا. عبادت کا حال ہے ماشاءاللہ. کہ امام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو بہت سی روایات ملتی ہیں تاریخ میں, یہ ہے کہ امام جو ہے غربا کی, جو ہے غریبوں کی, مساکین کی, یتیموں کی بہت عزت کرتے, اور جو کچھ اس وقت پر ہوتا اپنے تمام جو ہے مال و دولت جو ہے وہ ان پر صرف کر دیا کرتے تھے, اور ان کی عزت کرتے تھے, اور جس قدر ہو سکتا ہے ان کی مدد کرتے تھے. سبحان اللہ. Sister Roj, it is also mentioned, and a very important point to raise here and to inform our viewers who are watching, that after the tragedy of Karbala, the Umayyads and Abbasis, the people that time, they thought now Ahlul Bayt alayhi salam are in great sorrow, or they faced such a great tragedy, they are not going to be so prominent, they would remain silent, they would remain quiet. And their honor, their respect, what was ان کی نظر میں تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے ان کا جو مقام و مرتبہ گھٹایا, اور وہ گھٹ گیا. لیکن پروردگار عالم نے کتنے عظیم الشان طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کے روپ میں اس مسند امام جعفر صادق علیہ السلام کا, جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ورک, سیٹ کیا. And it is the time, actually it is the time when Imam Baqir alayhi salam himself witnessed that how the Islamic empire was changing from one dynasty falling to another. And it was the time when Umayyad's dynasty, after the tragedy of Karbala, Parvardigar ne dikhaya Imam ko aankhon se, Umayyad's empire was poised to crumble. But with this, Abbasis, another ruthless party, they were waiting to come into the power. And we saw both Umayyads and Abbasis, they were against Ahlul Bayt alayhi salam. But they thought now Imam's knowledge, Imam's works, Imam's influence on the people will be lesser than before, because the people of the house of Ahlul Bayt alayhi salam, they saw Imam Sajjad alayhi salam, our fourth Imam, all the time in sujood, in ibadat, in girya. They saw only in the prayers and supplicating to Allah Almighty. اسی طرح سے امام محمد باقر جو ان کے فرزند ہیں کہ امام کے جس طرح سے میں نے غربا مساکین کی مدد کے حوالے سے ذکر کیا, تو عبادت کے بارے میں ہے کہ اپنے والد کی طرح امام بھی سارا دن روزے سے رہتے اور شب و روز عبادت میں صرف کیا کرتے تھے. Sister Ruj will come back after a short break and will discuss the life and works of Imam, especially the works on the knowledge and how he started the knowledge from the masjid of his grandfather, and then the sessions of imparting knowledge was started the time of Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Mu'mineen, we are discussing with you the life of Imam Muhammad Baqir alayhi salam, who is known as Al-Baqir, the one who split open the knowledge, who knows the origin of a thing and the hidden branches of that, the one who set the ground for education and who taught the people of Medina, and it was a golden education time, the time of Imam Muhammad Al-Baqir alayhi salam. We'll be discussing more on it after a short break. کرنے کم سنی میں